दोस्तों, आज जो मैंने वीडियो अपलोड किया है इसको देखकर आपको लगा होगा कि ये किस तरह का वीडियो है। दोस्तों, मुझे थोड़ा लगा क्योंकि आज जब मैं वीडियो शूट करने के लिए गया तो मुझे एक पेड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर लटका हुआ ये मिला कौवा, लेकिन ये ज़िंदा नहीं था, मरा हुआ था। और जब मैंने गौर से देखा तो मैंने देखा कि जो पतंग की जो डोर, और जब मुझे देख के लगा कि भाई इसके मरने का के पीछे जो कारण है वो तो आदमी ही है। भले कुछ लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, क्योंकि उनके लिए आम बात होती है ये सब चीज़ देखना, जानवर को मारना, पकड़ना, शिकार करना। उनके लिए ये कोई मैटर नहीं करता, इनकी लाइफ मैटर नहीं करती उनके लिए। लेकिन हाँ, जो जीवों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, दया भावना रखते हैं, उनके लिए छोटे से छोटे जीव का भी बहुत महत्व होता है। और क्योंकि ये पंछी होता है ना, हम सबकी गंदगी को साफ़ करता है बिना कुछ आपसे मांगे। आप जो गंदा करके फेंक देते हैं उसको ये खाते हैं और आपको देते ही हैं, आपसे लेते कुछ नहीं है ये। तो ये देख करके मुझे बहुत दुख हुआ कि जैसे पतंग किसी ने उड़ाई होगी, भाई हज़ारों लोग पतंग उड़ाते हैं, और जो उसका मांझा यूज करते हैं, मांझा जो पहले पतले वाला यूज होता था ना, उससे इस तरह की उतनी केसेस नहीं होती थी। लेकिन आजकल जो मांझा यूज हो रहा है एकदम प्लास्टिक के तार जैसे वो होते हैं, और जिससे कि जानवर तो जानवर, पंछी तो पंछी, इंसानों की डेथ कई हो चुकी हैं। बाइक से चलने वाले लोग या रास्ते पर चलने वाले लोग के गले तक कट गए हैं और उनके स्पॉट डेथ तक हो चुकी है। इतना तेज़ होता है ये। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी हमें दया दृष्टि रखनी चाहिए। कोई चीज़ करने के पहले ना 4 बार सोचना ज़रूर चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं उससे किसी का नुकसान भी हो सकता है। तो मेरी यह आप सबसे प्रार्थना है कि ये जो मांझा, जो प्लास्टिक जैसा बहुत जो मजबूत मांझा होता है, उसको आप कृपया प्रयोग ना करें, और दूसरों का ध्यान रखें। केवल अपने खुशी के लिए, अपने मनोरंजन के लिए आप करते हैं, लेकिन सोचिए कि आपको पता भी नहीं होता और उसकी वजह से कईयों की जान चली जाती है। तो मेरा आपसे आप कह लें कि अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप कृपया उस कड़े मांझे का प्रयोग न करें और सबके प्रति दया भाव रखें। इस धरती पे जीने का सबको बराबर हक है। जितना हम इंसानों को हक है उतना इन पंछी परिंदों को भी है, जानवरों को भी है। तो कृपया अपने शौक़ के लिए इनको अपना शिकार न बनाएं, और इस तरह की जो गतिविधियां हैं उस पर नियंत्रण रखें, और कड़े मांझे का कृपया प्रयोग न करें। धन्यवाद। And for my English viewers, here I am putting a video of a crow that's not alive. It's a dead crow, and you can think that why I have put such video, because it was just shocking for me. I just saw when I went out to shoot my video. I saw that this crow was hanging on a tree, and it was a very high, far from my reach. And I saw that it was hanging with a string of a kite. And nowadays people have started using very strong kite string that looks like a plastic, and this has taken lives of many people, not only birds and animals. They have also taken a life of human being. Many people have died while riding bikes and just walking and running time, and it just comes to their throat and it seals their throats, in fact. And blood comes out, and it acts like a knife, in fact a sharp knife, you can say, blade like thing. So I saw this, this crow was hanging and it was dead, and it died I think 3 to 4 days ago. I think that those who are using such a string, very hard string, they should stop using such a string, because these strings are affecting life of birds and human being, and many people have died so far. And I know that for many people, those who do not believe in rights of birds and animals, they this thing doesn't matter to them, like lives of birds, and but these birds and animals have equal right to live on this earth, as we men have a right to live on the earth. And as a master we are controlling this earth, and we are just putting all the things in our own way, but these animals and birds have equal right to live on this earth. So we don't have right to take away their lives. So it's my request to everyone, please do not use these very strong, sharp kite string. It is affecting the birds. So please understand the importance of lives of birds too, because these birds are equally important for our society. They just clean our society. They eat our wastage. We people have to just throw our wastage, and these animals, creature, they just eat, and they just live on these wastage. So they are cleaning our environment and the society. So please think about it, and please do not use such a strong string.
Okay, I think my request will just put some impact on you, and those who have a little bit sympathy with these animals and birds, they will not use such strings again. Thank you.